आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. In this exercise, question number first is given, express each number as a product of its prime factor. आपने क्लास 7th और 8th में छोटे डिजिट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया हुआ है. इसीलिए मैं इसके छोटे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एंड 5, वो आप लोग होमवर्क में करना. ओनली आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4. नाउ देयर इज गिवन 5005. नाउ इट इज़ डिविजिबल बाय 5. जब भी आप इसको प्राइम फैक्टर्स करते हैं, आप इसको डिवाइड करते रहते हैं एंड यू कैन राइट इट. देन अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 7, देन यू कैन 11, देन 13 और 13 1 जा 13. It means this method is called the prime factorization method. 5005 equal to 5 multiplied by 7 multiplied by 11 into 13. And this is only your answer, because this question only it is given, find out the product of its prime factors. So this is the product of the prime factors. Now same to same in the question number 2, they are given find LCM and SCF and verify LCM multiplied by SCF equal to product of two numbers. Now here it is question number 2, it's a C, 336 and 54. Now again you have to find out the prime factorization of 336 and 54. 336 its prime factorization is here and the 54 prime factorization is here. Then you can arrange this composite number in the form of the product of the prime number. 336 is equal to, now that is your 2 into 2 into 2 into 2. It means कि 4 times 2, then multiplied by 3 multiplied by 7. Then it is here we write same to same 54. It is 2 into 3 times 3. Now 54 equal to 2 multiplied by 3 into 3 into 3. When you have to find out the LCM of 336 or 54 or any other digit number, then you can solve like this. Here it is 2 to the power 4 and 3 to the power 1 and 7 power is 1, because they are 3 and 7 and only one time in the product of 336. 54. Now you can write it 2 multiplied by 3 to the power 3. Now just see there कि how you will find out the LCM. जब भी आप कभी LCM लेते हैं तो आपको एक चीज़ करनी है. आपको क्या करना है, जब भी हम किसी का LCM फाइंड करेंगे तो आपको जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसमें जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी आप हाईएस्ट पावर को लिखेंगे. सपोज 2 to the power 4 और 54 में है 2 की पावर 1. विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर? 2 to the power, of course 2 to the power 4. So you can write 4 times of the multiplication. 2 into 2 into 2 into 2. Just again check it. The product of number of the 3. The number of 3 is your 3 to the power 1. Here it is only 1 power and 3 to the power 3. For the LCM, you choose again the highest power. The highest power between these two is 3 to the power 3. So you can write 3 multiplied by 3 multiplied by 3. And the 7, it is only one time. So you can write only one time 7 and then multiplied by these all term 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and then so on. And the multiplication of these all the term is 3024, 3024. So this is the LCM of these two digits. Now how to find out the HCF? HCF of 336 and 54 is, now how you will find out the SCF? SCF it means highest common factor. Highest common factor, again you have to see the prime factorization of these number. Now in LCM you choose the highest power of the number or digit, and SCF when you have to find, then you have to choose a lowest power of the
digit. Suppose 2 to the power 4 and there is 2 to the power 1. Which one is 2 to the power 4 and 2 to the power 1? Which one is the least power? Least power, it is only 2. So you can write in SCF, it is 2. And then 3 to the power 1 and 3 to the power 3. Which one is the least? Least one is the 3. So it is multiplied by 3. And 7 in 7 is the prime factorization of multiply and digit of 336, but 54 is in 54 7 is not present, so that is not a common digit between this, so you can't write it the 7, so only the SCF is 3 to 6. Now this is only the find. We will completed the find of LCM and HCF, but there is one question also given ki verify these formula. LCM multiplied by SCF equal to product of the two numbers. Now we know that what is the LCM of this digit, we know that SCF of this digit, and the product of two numbers, that is given 336 and 54. Now check it ki it is correct or not. Now as this is a LCM LCM multiplied by SCF equal to product of two numbers. LCM is 3024 multiplied by 6 and the product of two numbers, that is the question, two digit is given 336 multiplied by 54. So multiplication of this is 18144 and multiplication of this two digit is again 18144. It means both are the same, hence proved. So all the question second, it's a sub part you solve in the homework. Then the question number exercise 1.2 question number 3. Find the LCM and SCF of the following by applying the prime factorization of the method. Again that is the same question. So first we will solve here question number second. Now that is given 17, 23 and 29. 17, it is 1 multiplied by 17, 23, 1 multiplied by 23 and 29, 1 multiplied by 29. Now, how you will find out the LCM? LCM, because they all are the prime numbers, so LCM is only 17 multiplied by 23 multiplied by 29 and its multiplication is equal to 11,339. And the SCF, what is the common between these digits? Only 1 is the common between these all. So, SCF equal to 1. Same to same, the question number 3. Now see there the 8, all of you know that the prime factorization of 8, that is your 2 4 ja, 2 2 ja and 2 1 ja, it means 2 into 2 into 2. Same to same for the 9, that is 3 into 3 and 25, 5 multiplied by 5. Now you can write it 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 2. So LCM that is your 2 to the power 3, 3 to the power 2 into 5 to the power 2. That is your 8 multiplied by 9 multiplied by 25 and the multiplication of these three digits is 1800. And SCF in this prime factorization, only the 1 is common between all these terms. So SCF is 1. Rest question of question number 3, I think only one question you solve in the homework. Then continued in question number 4, they are given the SCF of 306 and 657 equal to 9. It means the SCF is given 9 and find out the LCM. But how you will find out? Because there is one formula. When you apply this formula, you are easily find out the LCM of the number. Now what is the formula? The formula is SCF multiplied by LCM equal to product of the two numbers.
Now SCF, the SCF they are given 9. So in the place of SCF you put 9 multiplied by LCM equal to product of the two number. The product of number, it is also given both the numbers. So 306 multiplied by 657, and this is in multiplication. When we transpose, then we have divide by the 9. When we have divide these numbers, so LCM equal to 22,338. Now this is your answer of the LCM. In the question number 5, check whether check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. अब आप सोचेंगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि अब इन्होंने हम लोगों को पूछा है कि एंड विद द डिजिट 0, तो 6 के टेबल में ऐसे कौन सा टर्म आता है जिसका मल्टीप्लाई कर दें, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें 6 को, तो आपकी इवन प्लेस पे आपको 0 मिले. 6 1 जा 6, 2 जा 12, तो कहाँ पर आपको 0 मिलता है? 6 5 जा 30. जब आप 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखते हैं तो 6 5 जा 30 आता है, और यहाँ पर जब 5 अगर आ गया तो आपका डिजिट एंड विद द डिजिट 0 हो सकता है. अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ऐसी कोई डिजिट हमको पॉसिबल है या नहीं है 6 टू द पावर n के लिए. If 6 to the power n and with 0, then it must have 5 as a factors. Look at this. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वंस प्लेस पर एंड करना है डिजिट को 0 से, तो आपके 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 5 चाहिए, और जब तक ये 5 नहीं आएगा आप लोग को के प्लेस लास्ट डिजिट पर 0 पॉसिबल नहीं होगा. सो इसीलिए ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, बट वी नो दैट ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, 6 प्राइम फैक्टर 2 3 जा and 3 1 ja. It means this 6 you have to write only the prime factorization of 2 and 3. So 6 to the power n equal to, in the place of 6, 2 3 ja 6 and its whole power is n as it is, and then 2 to the power n and 3 to the power n. फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. वी नो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज़ अ यूनिक, और यूनिक होते हैं. तो यहाँ पर जो है 2 और 3 के अलावा 5 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द 0. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, हियर इट इज़ गिवन, एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 into 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite number. Everyone know that, अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया है कि composite number वो नंबर होते हैं जो हम लोग के पास जब हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर कोई डिजिट और आ गई प्रोडक्ट में तो हम उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. तो यहाँ पर हमको ये इस टाइप से अरेंज करके दिए हुए हैं और बताना है कि व्हाई दे आर कंपोजिट नंबर. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक इट 7 into 11 multiplied by 13 plus 13 equal to, what is the common between this? Look at this, these 3 numbers are in the multiplication.
then it is given plus, and then this is 1 digit. Then what is the common between these 2 digit? Because this is the first digit, and after addition this is your second digit. Now look at there, the 13 and the 13, it means 13 is the common between this. So 13 you have to take the common and then multiplied by, which one is the left? After 13 there is 2 digits, 7 multiplied by 11 and then plus, and 13 is common, so 1. So 7 multiplied by 11 plus 1. 7 multiplied by 11, that is 77 plus 1, and that is your 78. 13 into 78. नाउ आपको इसके आगे प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो आप उनको बोलते हैं कि दैट इज़ कंपोजिट नंबर. और हियर इट इज़ 13 and 78 and it is multiplied by 1 also. So it is a composite number. Now the last question of this exercise, you read that in exercise 1.2 question number 7. There is given there is a circular path around a sports field and so on. There is 2 digit is given, 18 minutes and 12 minutes. And in this word problem they are given after how many minutes will they meet again at the starting point. जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक बेल बजी है, उसके अकॉर्डिंगली इतने टाइम बाद दूसरी बेल बजेगी, तो अगर आपको फाइंड करना है हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने टाइम बाद वो फिर से मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप केवल डिजिट्स का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. एक्सरसाइज 1.1 में जब आपको क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में दे आर गिवन मैक्सिमम. जब भी मैक्सिमम पूछेंगे आप एचसीएफ फाइंड करेंगे, और जब ये लोग पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन, तो कितने टाइम बाद वो वापस मिलेंगे, तो आप उसके लिए एलसीएम फाइंड करेंगे. सो एलसीएम ऑफ 18 and 12. आई नो कि आपको 18 और 12 का प्रोडक्ट करना, प्राइम फैक्टर करना आता है. तो 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो 2 to the power 1 and 3 to the power 2, and here 2 to the power 2 and 3 to the power 1. एलसीएम में आपको पता है कि जब आपके पास प्राइम फैक्टर्स किसी डिजिट्स के निकल जाते हैं तो आप लोग जो मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स होती हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं. सो यहाँ पर जो है एक 2 है और यहाँ पर 2 to the power 2 है. देन विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर? 2 to the power 2. सो दैट इज़ योर 2 to the power 2. Same to same for the 3 to the power 2 and 3 power 1. Which one is the highest? Highest power is 3 to the power 2. So 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36. After 36 minutes again they are meet. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी.